Hello everyone, welcome to CNA, the daily newspaper analysis. So today we are back with various topics to discuss. So before starting, I just want to convey you all a message that if you want to join our latest programs as well as offers, please do join our WhatsApp as well as the Telegram channel for the further updates. Also, we are starting with the GS Foundation class from next Monday. So please get in touch with us as soon as possible for the limited number of seats available in our center. Okay, so now let's start with today's analysis. The first news says about world population reaches 8 billion mark today and India will surpass China in 2023. So as per the United Nations estimates, so this world population reached around 8 billion on November 15, 2022, and the latest projections by the global body suggested that the global population could grow to around 8.5 billion in 2030. तो 2030 तक हम लोग 8.5 बिलियन बन जाएंगे, ठीक है? And that too, around 2050 we will be around 9.7 billion, और 2100 तक 2100 तक हम लोग बन जाएंगे 10.4 बिलियन, ठीक है? तो ये यूएन का एस्टिमेट बता रहा है, ठीक है? So today we could see about that this report which directly says about the population that we can see in the world today. Okay, so in the recent years, okay, the world population has reached this feat, okay, just because there are various number of regions. So we could see that the population growth is caused in part by the declining levels of mortality as reflected in an increased level of life expectancy at birth. And globally, life expectancy reached 72.8 years in 2019, which is an increase of almost 9 years in 1990. And further, the reductions in mortality are projected to result in average longevity of around 77.2 years globally in 2050. So countries with the highest fertility levels tends to be choose with the lowest per capita income, and therefore the global population has over time become increasingly concentrated amongst the world's poorest countries, most of which are located in the sub-Saharan Africa. So now, as the world population reaches 8 billion, India, which was formerly a powerful driver of the number of people on the planet, is experiencing a slowdown. And this is because the falling fertility rates in South Asian countries. Okay, so therefore today we need to encourage families not to go beyond having 2 children. And the world population is estimated by UN to have been 8 billion, with China and India accounting for more than third of the total. India's third of the total, and now India's estimate of population is around 1.38 billion, slightly slower than 1.4 billion that the World Bank estimates for China. ठीक है, तो इसीलिए इन द कमिंग टाइम्स, जैसे हम लोग बाय 2023 हम लोग सरप्लस कर लेंगे, ओके, इवन चाइना को, तो इसी के लिए यहाँ पे जो बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म्स है उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है अबाउट द यूएन दैट हाउ मच इंडिया शुड कंसंट्रेट ऑन दिस बर्थ कंट्रोल मैकेनिज्म्स. तो ये था अबाउट द 8 बिलियन मार्क व्हिच द वर्ल्ड टुडे रीच्ड. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. At 8th spot, India ranks highest on the list of climate protection. So today we could see that यहाँ पे एक report आया है. Okay, so as per the climate change performance index, India is on the track to meet its 2030 emission targets compatible with the well below 2 degrees Celsius scenario. Okay, तो आज ये हम लोग के लिए खुशी का बात है कि like India has climbed 2 spots to the rank of 8th out of 63 in the climate change performance index. So this improvement in rank is the result of India's low emissions and the increasing use of renewable energy. So the climate change performance index, by which recently published its report by 3 non-governmental organizations that track the climate performance of the European Union and the 59 other countries. So India together, it accounts for around 92% of the emissions. So therefore today the climate change performance index, which has been published since 2005 and aims at enhancing transparency in international climate politics, also enables the comparison of individual countries climate protection efforts and progress. So इसीलिए यहाँ पे जो हम लोग का की हाइलाइट्स है अबाउट द प्रोटेक्शन, तो यहाँ पे वही सब डिस्कस किया गया है. And today, even the CCPI reports says about that the country is on track to meet its 2030 emission targets. तो ये
बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है हम लोग के लिए, बिकॉज सिंस द लास्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया हैज अपडेटेड its nationally determined contribution and has also set announced a net zero target for 2070. So therefore, today we could see that India is on a right track. तो हम लोग के ऊपर we could see that this countries like Morocco, Chile, Sweden, Denmark, तो ये हम लोग से ऊपर है. Okay, so we are doing good today in this element of climate change. ठीक है, तो आज हम लोग सीरियस है about this climate change and its activities. तो इसीलिए यहाँ पे इंडिया को अप्राइज किया गया है CCPI के द्वारा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. 9 रशियन बैंक्स ओपन वोस्ट्रो अकाउंट्स फॉर रूपी ट्रेड. तो जो हम लोग का रूपी रूबल का ट्रेड होने वाले थे, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग का यहाँ पे एक बातचीत चल रहा था रशियन गवर्नमेंट के पास. ओके, इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रूपी रूबल ट्रेड है, और इसके लिए हम लोग का जो अभी वोस्ट्रो अकाउंट्स खोले गया है. ठीक है, सो वी नो अबाउट द वोस्ट्रो अकाउंट. तो वोस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट्स आर एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ correspondent बैंकिंग इन विच द बैंक होल्डिंग the funds acts as custodian for or manages the account of a foreign counterpart. ठीक है, so you can see that vostro, okay, literally means our account with you. ठीक है, so you can see about there are various number of other things or various number of other pronunciation of this vostro, nostro, loro. Okay, ये सब बहुत सारे चीज होते हैं. ठीक है, तो आज ये vostro account, okay, which means basically yours, okay, in Russian. So vostro account points at your account with us. ठीक है, तो यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर देयर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे तीन चीज आता है, याद रखना ये तीन चीज. ओके, एक है वोस्ट्रो, एक है नोस्ट्रो, NOSTRO, और एक है लोरो. ओके, ये तीन अकाउंट है. तो वोस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है? योर अकाउंट विथ अस. लोरो अकाउंट में क्या होता है? देयर अकाउंट विथ देम. और ये जो नोस्ट्रो अकाउंट है ये बोलता है आवर अकाउंट विथ यू. तो आज हम लोग का ये वोस्ट्रो अकाउंट्स खोला गया है. दैट मींस योर अकाउंट विथ अस. ओके, सो वोस्ट्रो अकाउंट्स आर जनरली हेल्ड बाय अ फॉरेन बैंक इन आवर कंट्री एंड इट जनरली मेंटेन्ड इन इंडियन रूपी. तो आज रशियन बैंक्स यहाँ पे अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं इन इंडियन रुपीज एंड देयरफॉर इट लीड्स टू शूट अप ऑफ द इंडियन रूपी वैल्यू. तो यहाँ पे वही बोला गया है. ठीक है, तो बस यहाँ पे समझना था अबाउट व्हाट इज वोस्ट्रो, नोस्ट्रो एंड लोरो. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. इन इजराइल फॉरेन पॉलिसी कैलकुलस ईरान लूम्स लार्ज. ठीक है, तो टुडे this problems of Iran, okay, that because Israel at some point of time was very much ready to supply nuclear missiles to Iran, but its objective in the recent times has totally changed and also aligned with America's to stop Iran's nuclear capability. So now if you see about the relations between Israel and Iran, why there is a shift of this policy? See, the 1979 revolution that brought the Shah's monarchy in Iran and turned the country into a theocratic republic. So this shift not just radically altered the Iran, but the whole region as well. And if the Islamic revolution has not yet taken place, Iran would have Israel supplied nuclear missiles, okay, which could strike deep inside the Sunni kingdoms across the Persia Gulf. Okay, so this revolution moved Iran, one of the natural powers in the region in terms of resources, geography and population, from an American ally to its top enemy. ठीक है, सो इसीलिए यहाँ पे आज जो डील यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच में फेलियर हुआ है, दैट इज द JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. तो इसी के बेसिस पे आज ईरान बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन एवरी फॉर्म्स ऑफ कैलकुलस ऑफ इजराइल्स फॉरेन पॉलिसी. ठीक है, तो आज इजराइल के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है विद द अमेरिका, ओके, नॉट टू डील विद दिस कंट्री. So therefore today Israel is directly going with some form of multi-directional strategy, because Israel has come up with this strategy and the approach driven by a common goal to escalate the shadow war with Iran and forge a stronger security partnership with the Gulf kingdoms, which could prepare them both for any full-scale war in the future while the US and Europe continue to hold talks with Iran. So what is the way forward with this rivalry? So it is true that the rise of a more cohesive anti-Iran axis is a significant change to the Islamic Republic. So the assassination of the recent time period, the allied Quad Force chief, that is Qasim Soleimani, okay, so it seems to have blunted Iran's clandestine operations abroad. But Israel's repeated attempt at sabotage have not stopped Iran from enriching uranium, which is now a step away from weapons grade level or building advanced centrifuges. So if the nuclear talks collapse, Israel would be left with not many options and have to escalate its shadow war further to meet its goal, which is very dangerous slow. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो कल्टिवेशन ऑफ नेटवर्क है,
ईरान के द्वारा, बी इट थ्रू हिजबुल्ला, बी इट थ्रू द जिहाद, तो ये प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टेबिलिटीज इन द वेस्ट एशिया। तो इसीलिए ये आज इसराइल के फॉरेन पॉलिसी में ईरान बहुत एमिनेंट प्ले करता है एक रोल। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है अबाउट द इजराइल एंड द ईरान रिलेशंस। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो वेर वी कैन सी ईरान, ओके, वेर वी कैन सी इजराइल ओवर हियर, ओके, सो दिस इज द पर्शियन गल्फ, दिस इज द रेड सी, ओके, दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान, देख लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज मिल्स bargain डिफॉल्ट ऑन सुगर एक्सपोर्ट डील ऑन कर्ब्स बॉय प्राइसेस। सो रिसेंटली ये क्या हुआ है, छोटा सा एक न्यूज है, दैट रिसेंटली इंडियन सुगर मिल्स आर एग्रेसिवली signing export deals contracting for about 1 million tons just 4 days after New Delhi approved exports as they get higher prices for their products in global markets. So the quick shipments from the world biggest producers of the sweetener and is the second biggest exporter could weigh on global prices. But it will help Indian mills in liquidating stockpiles quickly and prop up domestic prices. So now this industry was waiting for the government to announce the policy. So as soon the policy was announced, trader and millers started signing export deals, and this lead to an export of around 6 million tons of sugar in this respective year. So after the announcement, we could see the large number of deals coming towards India with 1 million tons of sugar only buying by the that is 1 million tons of sugar has been exported to this outside world just because India allowed the respective export. Okay, so now India was selling white sugar at a rate of around $480 a ton, but now अभी हम लोग का बढ़ के हो गया $534। तो अभी ये जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ गया है, and the people or the producers are directly expecting more and more number of returns, okay, in this perspective year। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे वही चीज डिस्कस किया गया है कि हाउ वी कुड डायरेक्टली बार्गेन एंड हाउ वी कुड डायरेक्टली एक्सपोर्ट द डील्स विद रेस्पेक्टिव टू द शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, चलो लास्ट में आते हैं वेडिंग इन। तो यहाँ पे वी नो अबाउट, यहाँ पे PIL फाइल किया गया था अनाउंस ऑन द फोर्स कन्वर्जन्स। सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेटेड दैट रिलीजियस कन्वर्जन्स बाय मींस ऑफ फोर्स, allotment or fraud may ultimately affect the security of the nation and freedom of religion and conscience of citizens. So the court also directed that the union government to take some of the steps to clarify what it intends to do to curbing compulsory or deceitful religious conversions. Also, the code highlighted that there may be a freedom of religion, but there may not be religious freedom by forced conversions. So this is a very serious issue, and everybody has the right to choose their religion, but not by forced conversions or by giving temptations. Okay, because हम लोग का constitution में भी बोलते हैं about Article 25, freedom of conscience, right to profess, right to practice, right to propagate. Article 26 में बोलते हैं freedom to manage religious affairs, 27 में बोलते हैं freedom from taxation for the promotion of religion, 28 में बोला जाता है freedom from attending religious instructions, 29 protection of interest in minorities. Okay, so about all this, if you say that today these rights are subject to public order, morality, health and other provisions relating to fundamental rights. So therefore इनका जो एसोसिएशन है, so यहाँ पे बहुत लोग ने इसके आर्गुमेंट्स में वोट किया था। सपोजली यहाँ पे बोला गया है कि दिस लॉज ओनली बैन एंड पनिश फोर्सफुल रिलीजियस कन्वर्शंस, okay, who are favor in this anti-conversion bill. Also, the fundamental rights under Article 25, right to propagate religion, did not extend to forced conversions. और कोई कोई लोग इसके अगेंस्ट में आ गए, okay, because कोई कोई एक्टिविस्ट बोलने लगे हैं कि such laws are used to target religious minorities and interfaith couples. यहाँ पे freedom of conscience violate होता है। Okay, so also this act does not satisfy the test of reasonableness and fairness, and it goes against the fundamental rights of Article 14 and Article 21. So इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ बोला गया है कि दिस एंटी कन्वर्शन लॉज हैज बीन चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स, okay, ever since we can see Orissa moved the first such legislation in 1967. But however, the courts have mixed recording, defending the freedom of choice with regard to religion, ruling in favor of the individual liberty in some cases, but not in the others. Okay. Also, in many occasions, various number of high courts clearly state that while a person has the right to believe and right to change their belief, they also have a right to keep their beliefs secret. ठीक है, तो इसीलिए अभी जिसने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे जैसे एक वर्डिक्ट, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि रिलीजन कन्वर्जन बाय मींस ऑफ फोर्स और बाय फ्रॉड में अल्टीमेटली अफेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कंसाइंस ऑफ सिटीजंस। तो इसीलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट दिया गया है। तो इसीलिए ये जो एंटी कन्वर्शन बिल है ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है, तो ये याद रखना, दिस इज द थिंग्स एसोसिएटेड विद दिस PIL। ठीक है, so that's all for today. We have got this 5 number MCQs. Please do attempt these MCQs and also do attempt this mains answer writing. Okay, so do join our WhatsApp as well as channel for the further updates as well as to get some of the free study materials. Okay, so that's all for today. Thank you and Jai Hind.